Good day to all of you. Today I'm going to share some notes regarding the topic allosteric regulation or the allosteric enzyme. So enzyme with modulator or the regulator site in addition to the active site called as the allosteric enzyme. We can say that presence of regulator other than the active site in the enzyme site known as the allosteric enzyme. The regulator activators activate the enzyme while the regulator inhibitor inhibits the enzyme. So binding of the modulator causes conformational changes in the allosteric enzyme which influence their catalytic activity. So allosteric site binds with the modulator and the catalytic site bind with the substrate. So here is the figure: more active enzyme and active enzyme substrate complex. So feedback inhibition. So the end product of the biosynthetic pathway inhibits the activity of the first enzyme that is unique to the pathway, thus controlling the production of the end product. And it is also called as the allosteric inhibition. So here is the chart of what is the allosteric side and what is the allosteric inhibition. So in this, according to the definition, फीडबैक इनहिबिशन जो होता है हमारा जो बायोसिंथेटिक पाथवे, दिस इज द पाथवे ऑफ द बायोसिंथेटिक. सो फाइनल प्रोडक्ट का जो भी होता है वह है प्रोडक्ट, वो अगर फर्स्ट एंजाइम्स की एक्टिविटी को इनहिबिट करे तो उसी को बोलते हैं फीडबैक इनहिबिशन. सो इन दिस द सफिशिएंट कॉन्सेंट्रेशन इज फॉर्म्ड इन द फाइनल प्रोडक्ट. सो इनहिबिट्स द एक्टिवेट द और इनहिबिट्स और मे एक्टिवेट्स द बाइंड टू द एलोस्टेरिक साइड ऑफ द एंजाइम 1. एंड व्हाट इज़ एलोस्टेरिक साइड? हम लोग जानते हैं कि एलोस्टेरिक साइड वो साइट है जो कि बाइंड करता है इंजाइम्स में रेगुलेटर और द इनहिबिटर्स. सो ATP when increase act as an inhibitor and ADP when increases act as the accelerator. So it may be the negative feedback or the positive feedback, and difference between the negative feedback and the positive feedback are as follows. So example of the negative feedback is the regulation of the blood glucose level and the osmoregulation, and positive feedback is the contraction in the childbirth and ripening of the fruit. और हम लोग जानते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस पाथवे में एक रिएक्शन आता है ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट थ्रू द हेल्प ऑफ द एंजाइम हेक्सोकाइनेज और द फॉस्फोराइलेशन ऑफ द ग्लूकोज. सो फॉर्म ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. तो ये जो है एग्जाम्पल है नेगेटिव फीडबैक का. वेल द फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट चेंज इनटू द फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, ये एग्जाम्पल है पॉजिटिव फीडबैक का. So this is all about the allosteric inhibition, feedback inhibition, allosteric site or the regulator site. Thank you.